See, if power supply available to us is DC, let us take a DC power supply, then in that case, what kind of power modulator we are going to use? बोलो, क्या power modulator लगाओगे? Which kind of power modulator will you use? The choppers. The chopper. DC converter that are choppers. Right? We'll use a chopper. And in this fashion, there will be a power flow. That it will move from here to here, right? And it will convert it into the mechanical energy, right? Your DC motor are the devices which converts your electrical energy into the mechanical energy. So we'll be using or we'll be governing this mechanical load through the power that will be converted by this DC motor. Okay, fine. Now to have the excuse me, sir. Sir, can we use the rectifier power modulator too? For the rectifier, we should have an AC supply. Sir, which will perform better if No, it is not like this key which will perform better. It is based on the requirement of the supply. Which kind of supply you are having? Okay, आपके पास AC सप्लाई है तो आप ये तो कह नहीं सकते कि भाई अब मैं डीसी चॉपर लगाऊंगा. अब तो आप मजबूरन आपको कैसे लगानी है? रेक्टिफायर लगाना है. डीसी सप्लाई अवेलेबल है तो आप डबल स्टेज कन्वर्जन कर सकते हैं. आप पहले डीसी से एसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर एसी को डीसी में करें. लेकिन कोई आपको क्या कहेगा कि भाई इसके एडवांटेज बताइए. जनरली क्या करोगे? अगर डीसी पावर सप्लाई है तो चॉपर यूज करें. चॉपर यूज कर लेंगे. यस सर. कीप इट द डिस्कशन एज सिंपल एज पॉसिबल, राइट? तो बात समझ में आ रही है? यस सर. And we may control this chopper or a power modulator using certain control circuitry that is embodied in a control unit. Okay, to this control unit we can give our desired speed on which we want to run this machine, this machine, right? And to make it a more sensible, a more robust, right, we'll make it a closed loop drive. So this could be a simple DC motor drive if your supply available is DC. Of course, if we are having a AC power supply, then we had to use a rectifier, and that to be the controlled rectifier. Your uncontrolled rectifier will not be able to serve you, right? So we had to use a controlled rectifier. Is this fine? Yes sir. Okay, let us make it, and before we study the DC motor drives, obviously we will be requiring the knowledge of this DC motor, and particularly the operation of this DC motor and the operation of these rectifiers. As based upon the configurations of these DC motors and the rectifiers, there could be numerous or multiple kind of DC motor drives. Okay, let us discuss it in a little bit deeper sense. We are discussing the DC motor drive. DC motor drive, right? Now, suppose if we let us take a more deeper look. Suppose we are having a DC motor. I think everybody knows the symbol of the DC motor. How do we symbolize the DC motor? We symbolize it with the two circuits. One the field circuit, other the armature circuit, right? This is the symbol of a DC motor. Yes or no? Yes, sir. If it's a separately excited machine, we had to give a supply over here, and we had to give a supply over here as well, right?
but we want to control this. Let us forget how do we are controlling it. But yes, we will have a DC motor. If we talk about the rectifiers, so how many kind of rectifiers we can have? Sir, controlled and uncontrolled. These are the devices converts your AC input into the DC output. Yes or no? Yes, sir. And classes we have for these rectifiers are controlled and uncontrolled, controlled, uncontrolled, and semi-controlled, in fact. Right? Uncontrolled are those which are called to be uncontrolled. Sir, which use diodes. Yes, the diodes which are being implemented using the diodes which are uncontrollable switches, right? How they are uncontrollable switches? Diode, as it get into the forward bias, it starts conducting, and in the reverse bias, it stops conducting. So it's an uncontrolled device. We cannot control its operation once it starts conducting, है ना? अगर डायोड जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा वैसे ही वो कंडक्ट करना शुरू कर देगा, अब आप उसको रोक नहीं सकते. ऐसे ही अगर ये रिवर्स बायस्ड है तो भी आप इसको अब ऑन नहीं कर सकते. दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अनकंट्रोल्ड डिवाइस. यस और नो? ये आपने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सब पढ़ा है, बताइए बच्चों. यस सर. अनकंट्रोल्ड की भी बात करें या फुल्ली कंट्रोल्ड की बात करें या सेमी कंट्रोल्ड की बात करें, दे ऑल कैन बी कैटेगराइज्ड एज फुल वेव एंड हाफ वेव रेक्टिफायर्स. बोलो. हाँ, अब कोई नहीं बोलेगा. Yes, sir. Whether it's a controlled, uncontrolled, or semi-controlled, all these rectifiers can be classified into two categories: half wave and full wave. Right? Half wave. What do you understand by half wave rectifiers? भावेश बताओ बेटा. यस सर. बताइए सर क्या बताना है? ऐसे ही हाथ खड़ा कर दिया सर. वो ऐसे ही गलती से दब गया था सर. वो सर गलती से दब गया. गलती से हाथ खड़े कर दिए. सर बताओ सर, क्वेश्चन तो बताओ. अच्छा, क्वेश्चन ये है कि हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? सॉरी, हाफ वेव रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हाफ वेव रेक्टिफायर्स? सर जो जैसे जिनमें एक ही डायोड लगाओ या एक ही वो स्विच लगाओ जिससे कन्वर्ट करते हैं, मतलब वन पल्स कन्वर्टर भी बोल सकते हैं. जैसे हम साइनोसॉइडल पल्स देते हैं तो सर वो आउटपुट में एक सिंगल मतलब 0 से t एक टाइम पीरियड है, तो सर वो 0 से t/2 के लिए ही देगा आउटपुट, बाकी t/2 से t तक 0 होता है. और नेगेटिव साइकिल में और कोई बताएगा? थोड़ा अभिजीत जोर से बोलेंगे. Okay, जो when the converters or rectifiers which converts only half cycle of the AC wave. Positive half cycle. It's not mandatory to have a positive half cycle. ऐसा है? नो सर. नहीं है सर. डायोड की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो. राइट, ये डिपेंड करेगा कि डायोड आपने कहाँ कैसे लगाया. राइट, तो yes, but yes कि half wave rectifiers only what they do, they only rectifies the half of the cycle of the complete wave, whereas in the full wave we rectifies both the cycles,
both the half cycles of the full wave, right? So in this way we can define these. Control rectifiers are those rectifiers in which we use, if it's a single phase rectifier, how much switches will be used? अगर सिंगल फेज रेक्टिफायर है, फुल वेव की बात करें, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, हाउ मेनी स्विच वी आर गोइंग टू यूज? इतना मुश्किल क्वेश्चन है Sir, 4. Yes, definitely there are 4, but if the input supply is 3 phase, how many switches we will require? Sir, 6. 6, right? लेकिन ये सब पढ़ना है ना, एक बार रिवाइज करना है, ठीक है बच्चों? ये सब रिवाइज करना है आपको एक बार कि हाउ डू द रेक्टिफायर्स वर्क, what does this control rectifier means, what does uncontrolled rectifier means, what are semi controlled rectifiers, how the waveform of the controlled rectifiers looks, particularly for the half wave and full wave rectifiers. ये मैं आपको एक्सरसाइज के लिए दे रहा हूं, इट्स एन असाइनमेंट बेसिकली, राइट? इट्स एन असाइनमेंट, एंड असाइनमेंट इज टू review the rectifiers, review on rectifiers. Also we have to review DC motors, as we have to study the DC motor types, right? अभी मैंने कुछ आपकी ब्रशिंग कराई रेक्टिफायर्स को लेके. Let us do a certain kind of brushing over the DC motors. So I think you all know that the rotating machines, they have the two parts, one called as the stator and one called as the rotor. Do you agree? Yes, sir. The stator is the static part which remains stationary, whereas the rotor, right? So it's a stator which remains stationary. We call it as a stator. On the stator, we have poles, and these are the pole shoes, right? Over these poles, we place the windings, and we call these windings as field windings. Am I right? बोलो बच्चों. Yes, sir. This is the base. Right. So this is the field winding, right? This is the yoke, and these all are the parts of your stator. Sometimes we also call it as stator winding. Right. The other part of the rotating electrical machine is known as the rotor, and that is being housed inside this stator. Right? Your rotor is a cylindrical shaped body mounted over the shaft. It's a cylindrical shaped body. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. On the outer surface of the rotor core, right? On the outer surface of the rotor core, we have the windings.
and these windings are usually called as, what we call them as, in case of DC motors, what we call them as? Armature winding. Right, armature windings. Whereas the rotor is called as armature. Obviously, because this rotor needs to be inserted inside this gap, so there should be some mechanism where it should, which can allow this portion to rotate, as this portion is static. So this function is being performed with the help of bearings. Bearings are attached on the both ends of the shaft, right? With the help of bearings and the front and the end covers, this portion, this rotor is inserted inside this stator, right? For the DC motor operation, we had to give the energy to this winding as well as this one. Okay, is this fine, bachcho? Yes, sir. Very good. So we have, and symbolically we can describe, or we can represent it like this way. If we have a field winding and we have an armature circuit. When we have learned that when your conductor or your rotor, basically conductor of the rotors, that is the armature winding, when it rotates inside the air gap where a magnetic field is being produced, right? We just have learned that on the stator we have the poles, right? We have poles on these stators, and these are electromagnetic poles, right? These are electromagnetic poles. So that means when we supply energy to this winding, a magnetic field will be generated. So magnetic field of lines will travel from north to south in a closed loop, and they will come up through the yoke, through the core of this stator, right? In both the directions. This will be the path of the magnetic flux, right? We have inserted a rotor inside this, which have windings on the outer surface. Now, when we rotate this, then definitely there will be an EMF that will be produced over these armatures. In case of generators, we call this EMF as generated EMF, whereas in case of DC motors, we call it as back EMF. Right? We call it as back EMF. Back EMF have the same expression as your generated EMF have in case of DC generators, and that expression is equals to, you could have learned, expression is equals to Z phi NP over 60A. Have you learned this? Where Z stands for the number of conductors on armature, right? Pi is the flux per pole, N is the speed of rotation, in RPM, right? A is the number of parallel paths. Fine. This A, how does this A, or on which factor this A depends? A की दो values पड़ी होंगी कि this A could be equals to P or it may be equals to 2. ऐसा कुछ पढ़ा था? बताओ। लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग।
Very good. So in case of lap winding, your A will be equals to P, right? Whereas in case of wave, your A, number of parallel paths of the armature winding, will be equals to 2. Yes, You have to sir. revise this. Okay? This back EMF, which can be counted as EB, which is usually equals to, or it is equals to EG, right? From Yes, this, sir. from this expression that EG equals to EB equals to Z phi NP over 60A, it has been derived. You could have read during your machines course that these factors, once your motor is being designed or manufactured, remains constant. We cannot alter the number of conductors on the armature once your motor is being manufactured. We cannot even change the number of poles of that machine. We cannot change the type of the armature winding, right? So these all remains constant. So they becomes constant. So we can write that EG or EB is equals to some constant K, right? Or KB pi n. From this expression, you could have learned the speed control strategies of DC motor, that your N is basically equals to EG over K phi, or EB over K phi. EG or EB, whatever you want to write, you can. भूटानी साहब तो अभी से लिखने लगे अटेंडेंस. So you could have learned from the course that your speed of the motor is directly proportional to the back EMF and indirectly proportional to the field flux. Based upon these, you could have learned the two strategies of the speed control of DC motors. One called as armature voltage control method, as this EG or EB in case of motors is nothing but it's the EMF that is being generated inside the armature circuit, right? When we have applied a voltage, terminal voltage VT, because of which let the IA current flows if it's a separately excited machine, and this is the different source, right? So from here we could have derived that VT is equals to IARA plus EB, where RA is the resistance of armature winding. Right? So we can say that EB is equals to VT minus IARA for motors. So we can write that N is equals to VT minus IARA over K phi. From this relation, we have derived the two speed control methods of DC motors. कौन कौन से थे बच्चों? जल्दी बोलो. आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल एंड, अरे क्या बहुत ही शांति है, कोई है क्लास में क्या? नहीं. हाँ,
ये सब सुना है कि नहीं, ये तो बता दो। यस सर। सर सुना है सर, पर याद नहीं है सर। शायद रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है है बेटा? सर, शायद रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है दूसरा। सर आर्मेचर रेजिस्टेंस कंट्रोल होता है दूसरा वाला। अरे फील्ड फ्लक्स, दो ही तो वेरिएबल हैं। ये है आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल। चाहे तो आप ये रेजिस्टेंस कंट्रोल करके देखो, यानी कि आर्मेचर रेजिस्टेंस बढ़ा लो या फिर टर्मिनल वोल्टेज घटा बढ़ा लो, तो ये ऊपर का ही तो चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड एज आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल। हम आखिरकार आर्मेचर की वोल्टेज के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। जबकि दूसरा क्या है, फील्ड फ्लक्स, राइट। तो दो मेथोलॉजी थी स्पीड कंट्रोल की डीसी मोटर की। पहला कहलाता था आर्मेचर वोल्टेज कंट्रोल और दूसरा कहलाता था फील्ड फ्लक्स। ठीक है, हमें यह भी पता चल गया कि फील्ड फ्लक्स के साथ इनवर्स रिलेशन है, जबकि आर्मेचर वोल्टेज के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि आर्मेचर वोल्टेज बढ़ाते हैं डीसी मशीन में, डीसी मोटर में, तो स्पीड बढ़ेगी। आर्मेचर वोल्टेज घटाएंगे तो स्पीड घटेगी। लेकिन इसके विपरीत यदि फील्ड फ्लक्स को बढ़ाते हैं तो स्पीड क्या होगी बताओ? अरे फील्ड फ्लक्स बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी? कम होगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। जबकि फील्ड फ्लक्स घटा तो स्पीड बढ़ेगी, राइट? यस सर। अब ये फील्ड फ्लक्स घटा बढ़ा कैसे सकते हो? आपके हाथ में है क्या? हाउ कैन वी इंक्रीज और डिक्रीज दिस फील्ड फ्लक्स? इसका क्या कंसेप्ट है भाई, फील्ड फ्लक्स को घटाने बढ़ाने का? कौन समझाएगा, बताओ? कोई एक बच्चा बताएगा क्लास का, कोई भी एक जो बिल्कुल चुप बैठे हैं वो ज्यादा बताए। बताओ। सर रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं रियोस्टेट लगा के। राइट, रेजिस्टेंस से कंट्रोल कर सकते हैं, ये आधी बात हुई। बेसिकली by controlling this field current we can control the field flux, right? Your field flux will be directly proportional to the field current. Field current means field winding current, right? जो आपने पोल्स के ऊपर वाइंडिंग की है, इसमें जो करंट है ये कहला रही है फील्ड करंट, राइट? एंड इट इज बीइंग रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्लक्स थ्रू द पोल्स। अब ये फील्ड फ्लक्स और इसका रिलेशन क्या है? यू कुड हैव लर्न्ड दैट फ्लक्स इज इक्वल टू एमएमएफ डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। पढ़ा है ये कभी नहीं? पढ़ा है सर। वेयर एमएमएफ इज व्हाट? मैग्नेटोमोटिव फोर्स। राइट? MMF for a winding, for an inductor, is given as number of turns into the current. Over reluctance. Reluctance is same as the resistance, right? But and it is equals to 1 upon permeability L by A. ये सब पढ़ा होगा। Now if we see for this inductor, the number of turns will remain some constant, let it be number of turns on the on your stator winding are NS, where reluctance is R, the current is IF. So again you see, once your motor is being designed, we cannot alter this NS. Number of turns तो हम change नहीं कर सकते winding के. We even cannot change this, cannot alter this reluctance,
as this reluctance depends upon the length of the conductor and the area of cross section, right? So we cannot even change that. That means your flux, if we talk about the flux, your flux is proportional to IF, we can say, as these will be the constants. Yes or no? Yes, sir. Right? So basically, to change the flux, we can change the field current. And to change the field current, either we can change this field voltage, or we can add on a rheostat in the field circuit in series to it. By varying this rheostat, now we will be able to vary the field current in this circuit. And by varying the field current, we can vary the field flux. Is this fine, bachcho? Yes, sir. Okay. Now one more thing. अच्छा, आज की क्लास ये समझो कि मतलब जस्ट ब्रश अप करने के लिए हो रही है क्लास. हम फिर से पढ़ाएंगे आपको, लेकिन एक बार रिवाइज कराना बहुत जरूरी है, क्योंकि डीसी मशीन आप लोगों ने पता नहीं कब पढ़ी, कैसे पढ़ी, है ना, पढ़ी कि नहीं पढ़ी, क्योंकि जवाब सर 1 साल हो गया सर पढ़े हुए, याद नहीं आ रहा 1 साल बाद. तुम्हें तो बेटा 4 साल का याद रखना है. यू हैव टू बी अ गुड इंजीनियर, है ना. यस. और उसके लिए 4 साल की याद रखनी है. मेरी उम्र में तो नहीं आए हो तुम लोग कि भाई ठीक है कभी याद रहा कभी भूल गए. यस सर. तुम्हें तो याद रखना है, तुम्हें अच्छा व्यक्ति बनना है. एक दिन मुझे तुम पे गर्व होगा, ऐसा व्यक्ति बनना है. अभी भवनेश ने भी इनको पढ़ाया था, है ना. तो ठीक है, एक काम करो फिर, मैं आज अभी थोड़ा सा, क्योंकि नहीं फिर सारा मुझे ही बताना पड़ेगा और तुम्हारी कुछ समझ कम आएगा. आज एक काम करो, अपने रोल नंबर लिख दो, लेकिन सारा ये जो है वो रिवाइज करना है. कर लोगे? Yes, सर जितना हो गया वैसे जैम बोर्ड तो उतना शेयर हो पाएगा, एक बार देख लो सर. मतलब इससे पिछली क्लास का ऐसा जितना जैम बोर्ड पे है अभी ऊपर 18 स्लाइड, हालांकि कुछ क्लियर हो गई थी. तो ये तो इसका तो ये हमने यहाँ से शुरू किया, यहीं मिलाते रहे. सर इससे पहले भी हम लोग की क्लास का ही है ना सर? है सर, हमारी क्लास का ये भी. तो इसमें से भी कुछ 1-2 स्क्रीनशॉट ट्राई करो तो वो कवर हो जाएंगे. कैसे करना है? लेकिन यार मैं कभी किसी को ऐसे नोट्स देता नहीं हूँ सर. तो वैसे भी बुक्स के हैं सारे, ऐसा तो है नहीं मैंने कहीं लिखे हैं अपने हाथ से. सर आपने जो समझाया आपने समझा रखा तो सर याद भी आ जाता है सर. इसलिए सर आपने समझाया सर, आपके नोट्स पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा क्या आपने बोला था. यस सर, बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है. क्लास की सर वो फील आ जाएगी ना कि ये बताया था ये इसी राइटिंग में. तो एक दिन और रुकोगे, अभी डाउनलोड करके दूं? कैसे होता है डाउनलोड से? यहाँ से? यस सर. कहाँ हुआ? हो जाना देते सर नीचे. और दबाओ एक बार बटन, क्या नहीं तो रुकोगे. सर Ctrl+J दबाइए तो. सर उसमें एक बार शेयर ट्राई करना. मैं अपने तरफ से उपाय का तो कर लूंगा. जो शेयर है इस पे मेरी ईमेल डाल दो सर. शेयर कर दूं? यस सर. तुम्हारे पास ना कंट्रोल चला जाए कभी, तुम फिर जो है मुझे नहीं सर, नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं करूंगा सर.